So let me start by saying this, that I will repeat this particular thing again and again, that why we need to do PYQs, why these are so important for us. And I'm repeating it, I'm writing in every single document that why it is very necessary for us to do PYQs. So with PYQ, see, we have to write wonderful answers. We have to assess that what kind of questions UPSC have been asking from us. And then what are the tools we have at our disposal to write and to prepare holistically for our exams. We have our syllabus, we have previous year's questions papers which have been asked repeatedly several times. So on the basis of those, we frame our strategy. ये PYQs और syllabus ही हैं जो हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम हमारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमारे नोट्स बनाते हैं, हमारी प्रिपरेशन हम करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. फाइन, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, that when we are looking at PYQs, we must understand that there are certain themes. वो हमको एक लीड प्रोवाइड करते हैं, they provide us the lead कि हमको कौन से क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स में हमारे पास हमसे पूछे जाने वाले हैं. So today we are going to discuss the topic political theory. Fine. अब syllabus में क्या है topic का that political theory meaning and approaches. Fine. This is our syllabus. और क्वेश्चंस हम 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब देखिए, हमको फॉर एग्जांपल हमको एक दो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे एंड देन आई विल टेल यू दैट हाउ कैन वी एक्सपेंड द थीम्स, हाउ कैन वी सी that within from one questions we can expand several themes. Fine. So this is how we get into the mind of the examiner. हम examiner के minds के अंदर हम जाते हैं and we find out that how they are framing the questions. So let's explore this. For example, the first question is political theory is not an escape mechanism but an order calling. ये जॉन पोलोवांजा की statement है and we suppose that we are having this particular statement with us. Now we have to assess that how different themes can be expanded from the single question. और फिर उससे मैं आपको सारे questions आपको link करके दिखाऊंगा कि with this particular questions we can link every single question of this theme, political theory की theme को. अब हमको समझना क्या है, when we are exploring the theme we must understand that उसमें से कितना कंपोनेंट हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हमको इंटीग्रेट करना है. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि क्वेश्चन की थीम, एक टॉपिक की थीम बहुत सारी निकल सकती हैं, लेकिन जब हम उसका आंसर लिखने वाले हैं, उस क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं, तो जो उसका मेन जो डिमांड है उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी की थीम को हम ज़रूर उस आंसर के अंदर डालेंगे ताकि वो आंसर होलिस्टिक बन जाए. आई एम रिपीटिंग इट दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन demands from us that we can make it holistic by touching upon all those areas. हम सभी areas को हम touch करेंगे and when we touch all those areas we are going to make our answer holistic. अब इसी बात को समझना है कि एग्जामिनर के पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. What are the tools examiner has at its own disposal to make the questions. उसके पास syllabus है, उसके पास PYQs हैं. अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कौन से क्वेश्चंस को वो फ्रेम कर सकता है, उसके पास में एक तो चॉइस है कि वही क्वेश्चंस रिपीट कर दे. जैसे कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 18 में पूछा गया, 2023 के अंदर पूछा गया, इसको बोलते हैं सिंपल सीधा रिपीट कर दिया क्वेश्चन. एक तो ये उसके पास में ऑप्शन है. दूसरा, वो उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर दे. फाइन, स्टेटमेंट को चेंज कर दे, उसके लैंग्वेज को चेंज कर दे, थोड़ा सा उसको बदल दे, उसको ट्विक कर दे, सेम क्वेश्चन वही सेम रहेगा. तीसरा, उसके पास में जो होता है वो होता है उससे रिलेटेड जो थीम है उसको क्वेश्चन बना दे. फाइन, इसके ऊपर हम बात करेंगे. रिपीटिशन तो हमको दिख जाएगी कि सिंपल रिपीट हो रहा है, लेकिन हाउ वी कैन सी दैट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर थीम को पढ़ने के बाद में हम कैसे उसके सारी डिफरेंट थीम्स वी शुड बी नोइंग एज ए एस्पिरेंट, वी शुड बी नोइंग ऑल दोज डिफरेंट थीम्स. अब इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन ऑर्डर कॉलिंग. अब पढ़ने में तो ये लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. फाइन, इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि इसने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही इस थ्योरिस्ट ने, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस थिंग दैट द क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी. ये दिस इज द की टर्म, पॉलिटिकल थ्योरी. नाउ
the question is about, it is not an escape mechanism. This is not something that you escape, providing some kind of escape to us. You have to do something concrete with the political theory. Fine. So, जिस किसी ने भी political theory की criticism की है, this person is defending that this is not something very easy. This is something you should do the concrete thing with the political theory. So the essence of this particular question is bringing the significance of political theory. Fine. We are going to, this is the most difficult question in this particular topic. So इस particular question के अंदर हमको significance हमको डालनी है पॉलिटिकल थ्योरी की. अब यहाँ पे आप समझना, आने वाली 2 मिनट के अंदर आप ध्यान देना कि कैसे हम एक छोटी सी थीम से हम कैसे वेरियस डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस इज द एसेंस. सो क्वेश्चन क्या, अगर आपके पास क्वेश्चंस पेपर ना हो, इफ़ यू कैन नॉट सी इट प्रॉपरली, जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है क्वेश्चंस का टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या फिर इसके जो भी इसके नीचे भी अगर आप देखें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. यू कैन हैव दीज क्वेश्चंस विद यू, एंड इफ यू, आई डोंट थिंक सो इट्स आर these questions are clearly visible to you people, but it is for my understanding. उसके लिए मैंने पहले से PDF शेयर कर रखा है. Political theory के questions I am going to discuss. So see, the question, the main essence of this particular question is the significance of political theory. So key term है political theory. Fine. The key term is political theory. You have to write about the political theory, that what is political theory. Fine. And now when you are writing the political theory, the essence is that there are some criticism. उस criticism को deal करने के लिए he is saying that it is not an escape mechanism. It is an orders calling. We have to do something concrete with political theory. Fine. I will come to this thing. So political theory. So what is political theory? I have discussed with you people several times. Political theory is some kind of academic explanation of political phenomena, political developments, political events, political actors, political institutions, whatever political is there. Whatever political is there, it is some kind of academic explanation of that particular thing. Okay, academic explanation means the things which can make a proper sense. Fine. और एक political theorist का agenda क्या होता है? What is the agenda of political theorist? There are certain issues in the society. There are certain problems in the society, political society, and political theorist is bringing certain solutions. वो पहले तो रीजन बताएगा कि why these things are happening, and this is the solution I am bringing with this thing. चाहे वो प्लेटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे मैकेवली हो, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे वो होब्स हो, whosoever the theorist is, a philosopher is, they are bringing something to the table that this is the solution. Are you getting this thing? So this is what political theory is bringing something to the table, and when it is being criticized that it is not bringing something concrete. अब इसको अगर मैं लिंक करूंगा इन सभी क्वेश्चन से, बट फर्स्ट यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन क्वेश्चन अंडरस्टैंड वन दिस थिंग, दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी. और इसको इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि एसेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, व्हाई डू वी नीड इट, एंड व्हाट वी डू विद द पॉलिटिकल थ्योरी. फाइन. In introduction you can write this thing. This is the scope of you writing the introduction part. Now the second thing is that what is the significance of this political theory. Fine. And then if there are some limitations which has been being discussed by the decline of political theory, we are going to comment on this particular dimension. So if there are any limitations related to political theory, we should be knowing this thing. Then if we are doing something to remove these limitations, what is the way forward, or any kind of suggestions with respect to this, we should be knowing about this as well. Fine. What are the different approaches to study political theory, and what are the limitations of those particular approaches? This can be also one of the dimension. Fine. So these 5 to 6 dimensions we can explore from this particular topic, political theory. Now this particular question, the first question is asking us that what is the significance of political theory. If it is being criticized, it is being questioned, the significance, the value of political theory has been questioned, so how we counter that? So it is an orders calling. We have to bring something to the table. Fine. If we are going to connect this with different dimensions, now this is going to be easy for us. Understand this. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? इलुसिडेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म्स पॉलिटिकल विद एप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन.
अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो पॉलिटिकल है उसके डिफरेंट डायमेंशंस को हमको एक्सप्लोर करना है. फाइन. सो पॉलिटिकल थ्योरी हो सकता है, पॉलिटिकल थॉट हो सकता है, पॉलिटिकल फिलोसफी हो सकता है, एंड देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल. फाइन. और यहाँ पे हम पॉलिटिकल थ्योरी को प्रोमिनेंटली वी कैन ब्रिंग into the picture, that if we want to say that the political theory, political science, so the political theory is part of political science, and again political philosophy is also normative political theory. Then the empirical political theory, which we are going to discuss in behavioral revolution, that is also part of this. Okay, the political ideologies. So how these things are being related to the term political, we are going to explore all these things in this question. So ये थोड़ा सा होलिस्टिक क्वेश्चन था, बट इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन आंसर इट टू सम एक्सटेंट, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल, जिनका नेचर पॉलिटिकल है, एंड विच आर कंसर्न टू ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. फाइन. हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर विद विच दिस पॉलिटिकल टर्म इज बीइंग एसोसिएटेड. वो चाहे कोई भी चीज़ होती है, पॉलिटिकल फिनोमिना, पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल एक्टर, वट एवर थिंग इज पॉलिटिकल. Fine. So you can make this thing a very holistic answer. Now again, discuss the significance of normative approach to the political theory. Now if you know that this thing, that there are some different approaches. ये question syllabus के अंदर भी है, political theory meaning and approaches. So what are the different approaches? अगर आपसे यहाँ से इसने significance of normative approach पूछ लिया, तो you should be knowing about what is normative approach to political theory. What is significance and what are its limitations? So again, when the examiner is framing the next year questions, they can ask that what is the limitations of normative theory. Fine. और limitations of normative theory आपको decline of political theory में आपको लिखनी है. This is the beauty. This is how you need to understand that these are the limitations of political normative approach to political theory, and that led to the decline of political theory. So this is how you interlink. Fine. And again सीधा इसको 2020 में पूछा गया है. अगेन सीधा इसने पूछ लिया नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, एंड दैट इज पॉलिटिकल नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी इटसेल्फ. थोड़ा सा उसने ट्विक किया बस उसको, एसेंस एंड द क्वेश्चन इज सेम ओनली, बट द एग्जामिनर इज जस्ट चेंजिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. अंडरस्टैंड दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स. एग्जामिनर के पास पे ऑप्शंस नहीं है क्वेश्चंस फ्रेम करने के. अगर 19 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं तो 2-3 क्वेश्चन के साथ ही वो छेड़छाड़ कर सकता है. 15 to 16 क्वेश्चंस आर विद इन योर रीच. वो सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, वो सिर्फ 2 थीम्स अगर होंगी उसको एक क्वेश्चन के अंदर फिट करके वो क्वेश्चन बना सकता है. दिस इज ओनली एग्जामिनर कैन डू, नथिंग मोर देन दैट. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस हाउ दे आर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस, हाउ व्हाट यू नीड टू डू बीइंग एन एस्पिरेंट. अगर आपने फाउंडेशन कर लिया, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फाउंडेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर फाउंडेशन, if you are still struggling with the different areas of your syllabus, so you must understand this thing कि यहाँ से आपको एक्सप्लोर करना कि कौन सी डायमेंशन आई नीड टू स्टडी. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर माय डियर फ्रेंड्स. यहाँ से आपको पता लगना है कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, whether it is relevant or not, whether it is going to come in my exam or not. This is what you are going to identify with the help of PYQs. इसीलिए significant है. Fine. Are you getting this thing? It is not that you are going to find out that by ये questions they are going to ask as it is. No. Although there are chances, ये ऐसा हो सकता है कि वो questions आ जाएं बिल्कुल as it is. But the essence is this, that you have to find out various dimensions, various themes from these PYQs. On the basis of you can mold your strategy, you can mold your preparation so that they can ask anything and you would be in that position to answer anything. तुम कुछ पूछ लो, मैं तुमको बता दूंगा. Because I know that what is your level. तुम कहाँ से पूछ सकते हो, मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, मैंने सभी डायमेंशन एक्सप्लोर कर ली है. तुम पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइन के बारे में पूछो, मैं तुमको पॉलिटिकल थ्योरी बताऊंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी डिक्लाइन हुई तो क्यों हुई, उसके रीजन क्या थे, डिक्लाइन के बाद उसका रिसर्जेंस कैसे हुआ. दैट इज आई विल टेल यू. एंड व्हाट इज द द ओवरऑल एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. विद हेल्प ऑफ
कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर. तो क्वेश्चन उसने पूछा है कुछ भी, क्वेश्चन उसने सिर्फ पॉलिटिकल डिक्लाइन के बारे में पूछा है. यू हैव टू टेल द पर्सन अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, normative approach obviously, because that is going to become the, you know, the part of decline thing. And then decline comes. अब ये क्वेश्चन अगर ये डिक्लाइन आया हुआ है तो यहाँ पे आप आंसर के अंदर इसको 50 to 60% आपको आपका जो कंटेंट है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए. फाइन, 50 to 60% आपका इससे रिलेटेड होना चाहिए. अंडरस्टैंड दिस थिंग. और बाकी आप लिखिए, यू राइट द डिफरेंट डायमेंशन. उसके अंदर you can mention the resurgence as well. You can mention that how this particular thing, this particular decline, you know, created lots of different opportunity to bring other dimensions into this particular stream of political science. Fine. So this is how you can make your answer holistic. Not only your answer holistic, your preparation holistic. I think I am able to convey what exactly I want to tell you, that with the help of PYQs you have to expand different themes. और वो थीम आपको बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स कितने हद तक प्रिपेयर करने हैं. और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी कंटेंट को अप्रोच कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड दीज थीम्स इनटू दैट कंटेंट, सो वो कंटेंट इनसफिशिएंट है. इफ एनीवन इज टीचिंग यू एंड नॉट एबल टू एड्रेस and not able to bring these particular dimensions into their teaching, so वहाँ पे भी कुछ कमियाँ हैं. But again, you are responsible for your own preparation. You should be knowing कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये हमेशा रिपीट होती आई हैं और हमेशा ऐसे इनको पूछा गया है तोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे करके. We must be preparing these dimensions. So understand this thing. This is the essence. This is, I will repeat again and again, that you get exposed to one particular thing, उसके different dimensions को आप explore करो. यही prelims में होता है. When we approach PYQs, we see the peripheral areas of that questions and then we find out कि अब इसके आगे क्या पूछ सकता है examiner. The same approach we applies to our mains exam. So normative approach के बारे में लिख दिया आपने, decline के बारे में, next resurgence of political theory के बारे में पूछा है. So again you can link both the thing. Decline हुई तो उसका resurgence भी होगा ना. Fine. If you are writing the decline, you must be knowing कि उसका resurgence भी हुआ. So what are the reasons of resurgence? What led to this resurgence? So you bring all these dimensions. And now let me tell you this thing. When we are writing the behavioral approach in political theory, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है. So behavioral approach was the revolution which proclaimed that political theory has been declining. It is not bringing something to the table. भाई वर्ल्ड वार हो गई, लोग मर रहे हैं. If I say right now that political theory is not bringing something concrete in contemporary times, गाजा में लोग मर रहे हैं, US है ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहा है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय द unilateralism of USA. So all these developments are taking place and we see that we are not able to find out the concrete answer for these issues. It means political theory is not able to provide something concrete, some concrete solutions. अरे भाई theory क्यों लिखी जा रही है? It is being written so that it provides some solution ना. That is why we are studying it. अगर कोई sense ही नहीं बन रहा तो why we are studying it? Isn't it? And if it is not bringing anything concrete to the table, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ, you know, there are some flaws. So that is what it is being, you know, said by the decline of political theory. और वही behavioral approach ने इसको highlight किया that this is why we are saying that political theory has been declining. So ये सारे theme interrelated हैं behavioralism के बाद में. अब behavioralism की जो limitations थी, what led to it declines. अब इसका डिक्लाइन जो हुआ उससे पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का जन्म हुआ. द राइज ऑफ पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच इज रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच. दीज आर इंटररिलेटेड. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू पीपल, दैट यू लिंक ऑल दीज डायमेंशंस, ऑल दीज थीम्स एंड यू विल फाइंड what is they are going to ask you in the next exam. Fine. So behavioral approach, इसकी डिक्लाइन. Then post-behavioralism advocates the importance of action science analyze. So now see,
बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पूछा 2016 के अंदर. अब 2023 के अंदर इसने क्रेड ऑफ रिलीवेंस जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का एसेंस है, दैट व्हाट सी पॉलिटिकल थ्योरी हैज नॉट बीन डेड, इट इज स्टिल रिलीवेंट. जो वैल्यूज हैं जो उनको इन्फ्यूज किया जाना चाहिए फैक्ट्स और एनालिसिस के अंदर, देन दे कैन मेक मोर सेंस. सो इट इज द एसेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म. Action science, I discussed with you earlier as well. And when we say about action science, you are not just proposing things, you are not just armchair theorist, you are taking participation into that particular, political events. Fine, they talk about being political theorist, being activist. Fine, that is why it is being called action science. आप इन्हीं चीज़ों को आपको ऐसे ही इंटरलिंक करना है. और 2024 के अंदर सिंपल पूछ लिया बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस. फाइन, सो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग इंटररिलेटेड. देन अगेन दे आर डिस्कस डेविड ईस्टन्स मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड अगेन सिस्टम अप्रोच इन 2022. इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है. अब सिस्टम एनालिसिस इज आल्सो रिलेटेड टू दिस empirical approach to political theory. Fine, David Easton was related to behavioral revolution. He also gave this particular system analysis to see that political event, or what we say, the political development taking place around us, it's not just like this, it is interconnected. It's like a system, it's like a body, that how our hands or how our legs makes the entire body. This is how there are different parts of a political system which makes it holistic. So इसीलिए David Easton, who is related to behaviorism as well as post behaviorism, gives this system analysis. And then the last question, Eurocentrism is both target and the motive force of post-colonial political theory discussed. So this question was primarily, it seems like ये तो यार different kind of question इन्होंने पूछ लिया. But again, understand this thing. It is not a different kind of question. So it shows that if we criticize political theory in contemporary times, we find out that earlier theories were Eurocentric, means they were just focusing on whatever development taking place in Western countries. Whatever solution they were proposing, those solutions were related to what are the issues being faced in Western, Western settings. जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो इश्यूज थे उसी को सोल्व करने के लिए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट वर बीइंग प्रपोजिंग सर्टेन थ्योरीज. दे वर नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट हैपनिंग इन द थर्ड वर्ल्ड. फाइन, so that is why it has been alleged that Eurocentrism is target, that post-colonial theorists, they are targeting the Eurocentrism. Fine, but when we say motive force means this was the, when you get exposed to different kind of knowledge, then you understand यार हमारे बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है. Fine, so you get that kind of inspiration. अब एजुकेशन ने किसी को इंस्पायर किया ना, that is why we started studying about different political systems in different settings. So it was this particular exposition that brought post-colonial theorists to this conclusion that we must find out, we must make certain analysis relevant to our own domestic settings or relevant to the third world. So Edward Said ने जो Orientalism की जो theory दी, we can mention into this particular dimension. So essence is all this discussion is that कोई भी question वो पूछ ले हमसे examiner, we are going to expand the themes, we are going to get small questions out of that particular question, and we are going to interlink every single questions and find out that how we can we can answer that particular question and how we can prepare our all the different topics on the basis of that. So let me sum up the entire discussion in just one last minute, that when we are writing these questions, understand this thing, you are not just concerned about whatever exactly is being asked. उसकी जो peripheral knowledge है,
you should be knowing about that as well. That is going to make your answer holistic. आप और dimensions भी आपको लिखना है. मैंने बताया था आपको 50 to 60% is the main demand, but peripheral things you should be writing so that your answer become holistic, and you are always prepared to write whenever they ask any questions from you. Fine. So this is the essence of us doing these PYQs. So I will provide you the model answers of these questions, handwritten model answers. But essence is this, that when we are writing these PYQs, we are, creating this kind of orientation in our mind that the examiner is asking us these kind of questions, and we are ready to write these kind of questions, and we are also making us to, efficient enough to handle if they ask any kind of questions from us. Fine. So this is the idea of exploring all these questions, all these PYQs, and I hope this session is helpful to you. And if you have any doubts, anything, you can write down in our group. We are going to discuss those when you write your test. We are going to discuss your test paper, the kind of questions you have been writing, and your doubts we are going to discuss in the next lecture. Okay. So thank you so much.